वेलकम टू सीरीज 3 ऑफ सप्रेशन। लास्ट 2 सीरीज में हमने देखा था सप्रेशन क्या होता है। सप्रेशन की तीनों स्टेजेस को भी हमने समझने की कोशिश करी थी। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। हाउ डू वी डील, हाउ डू वी लर्न टू डील विद सप्रेशन? So there are a lot of ways. Number one way is to deal with it logically, which means self-talk. Remember, we have talked about it, the concept of self-talk. When we do self-talk, talk to yourself as to why every time when this situation happens, I feel sad. The consequence, I feel sad or I feel hurt. What is there in that situation? Which means, what am I thinking in that situation? What is the belief I carry in that situation? When you do that self-talk again and again, focusing on the solution, that what is the thinking which I am generating during that situation, which is always leading me to hurt. Now one has to be really patient in that. ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ एक बार 2 बार सेल्फ टॉक करा और ये बहुत लॉजिकली मैं डील कर पाऊंगी। नो, यू रिमेंबर, इस स्टेज में इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ओवरपावरिंग है, तो वन हैज़ टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू वन सेल्फ। बार बार खुद से बात करें, बार बार फोकस करें एज अ थर्ड पर्सन कि ऐसा क्यों हो रहा है, वॉट इज दैट थिंकिंग विच आई एम जनरेटिंग। ऑलवेज रिमेंबर द थंब रूल, थॉट्स लीड टू द फीलिंग्स। जैसी सोच होगी, जैसे थॉट्स होंगे, वैसी फीलिंग जनरेट होती है। नंबर 2 वे इज क्रिएटिंग एफर्मेशंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई एम पावरफुल एंड नो सिचुएशन आउटसाइड कैन इम्पैक्ट माई इनर स्टेज। टेक दिस एफर्मेशन एज एन एग्जाम्पल एंड यू क्रिएट योर ओन एफर्मेशन। आप अपने एफर्मेशन खुद क्रिएट करो, क्योंकि जो एफर्मेशन आप अपने लिए खुद से क्रिएट करेंगे वही आपके लिए वर्क करेंगे। एंड दैट इज बेसिस द सिचुएशंस, बेसिस योर ओन पर्सनैलिटी, बेसिस द कॉन्टेक्स्ट यू आर इन। सो क्रिएट दैट एफर्मेशन फॉर योरसेल्फ बिकॉज इट फिल्स पावर विद इन। एफर्मेशन इज लाइक मंत्र। जैसे मंत्र जाप करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि मंत्र जाप करते 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 वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सो ट्रीट इट एज अ मंत्र और एज अ एफर्मेशन फॉर योर सेल्फ एंड कीप जस्ट 1 or 2 एंड कंटिन्यू टू रिपीट इन द डे। गिव योर सेल्फ पावर विद एफर्मेशंस। दैट इज नंबर 2 वे। तीसरा क्या तरीका है? तीसरा तरीका है विच इज़ अगेन अ पावरफुल वे, विच इज़ एक्सेप्टिंग। होता क्या है, मोस्ट ऑफ दीज टाइम्स वी रेजिस्ट, वी कंटिन्यू टू रेजिस्ट दैट दिस इज नॉट हैपनिंग विद मी और वाई इज इट हैपनिंग विद मी। देर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल विच कंटिन्यूज टू हैपन विद इन। सो पुट इट टू रेस्ट, एक्सेप्ट दैट येस if it is happening, and understand that acceptance is not losing, it is not a failure. Acceptance is a strength. It will fill power within you, it will give you power because you have stopped that resistance. So this works at a mental level. Accept. Number 4, again, which is related to acceptance. When you are able to accept, then forgive yourself. Always remember, who is creating hurt in this entire situation? जो भी आपकी सिचुएशन है जिसमें ये सप्रेशन और हर्ट क्रिएट हो रहा है, हर्ट किसको मिल रहा है? हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। So please forgive yourself. And you will see, when you forgive yourself, you will feel light. Forgive yourself and say, it is okay. I forgive myself for all the pain I have created for myself. When you forgive, then you will feel there is a peace within,
which you create, and you will feel very light. And again, it is not about कि हमने एक बार बोला, दूसरे दिन बोला, नहीं. We have to do it every day before sleeping. Forgive yourself. Talk to yourself and forgive yourself. And say sorry to yourself, forgive. Become light. Continue doing that and you will see, eventually you will start feeling light. Fourth, this was the fourth way, and last but not the least, one of the most generous, or rather it's the most impactful way, is when I say and when I think that how can I help others, which means yes, there is a feeling, there is a challenge which I have, and understanding that ऐसी सिचुएशन में और कई लोग होंगे, तो मैं क्योंकि इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, I am the right person to help others also because I know how it feels. I know how it feels to undergo these situations, how it feels to be in pain, how it feels to be hurtful. When the focus shifts from my problem to helping others, to creating solution for others, then something magical happens. आपकी अपनी प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगने लगती है and your focus goes completely on the solution to help others. That is the most powerful, purposeful way of dealing. But it may not come that naturally and it may not come that easy. So focus on the top 4 areas, top 4 ways to deal with this challenge, and yes, ultimately is the 5th one, and all your problems become very, very small. Please continue to practice these and see which one resonates with you the most, which one is the most effective way of working for you. And last, not the least, take it as a homework for yourself. Because what happens when we have suppression or when we have this negative feeling, there is a lot of negative energy, wasteful energy जो हमारे अंदर fill हो जाती है. So what you have to do is journaling, which is write. Every day, take a diary and write. Create your own diary. अंदर जो भी चल रहा है, उस एनर्जी को बाहर निकालें, उस नेगेटिविटी को उस पेपर पे निकालें, which means through your writing. Let all your emotions, all your thinking, feeling come out on that paper so that you become light. You become free of negativity eventually. Please keep doing this homework every day so that छोटे छोटे जो डेली के ट्रिगर्स होते हैं वो हम ऐसे बाहर निकाल दें and we avoid getting into the stage of suppression completely. Please remember, all these ways जो हमने बात करी हैं, ये सारे तरीके will work if we are in the mild form of suppression. But अगर आपको लगता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है और you are aware that you are in the stage of depression, तो इन छोटे छोटे टेक्निक्स को तो करें, but please also go and see a doctor, a wellness or a mental health doctor. Take help, seek out for help, and continue to practice these things on a daily basis. Thank you.